Guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide, and today we're going to work out metaphysical poetry. सर पोएट्री को समझने के लिए जरूरी है कि मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है और कौन-कौन सी चीजें जो हमें आनी चाहिए. एंड व्हाई यू गाइस आर रियली वरीड अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्री? क्योंकि इसका एक क्वेश्चन कंफर्म है जो एग्जाम में आना है. Whether you're a student of English honors, masters or UGC NET JRF की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप कोई भी पेपर करते हैं वहाँ पे मेटाफिजिकल पोएट्री एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है. एंड दोज हु आर गोइंग टू गिव द एंट्रेंस ऑफ PhD, उनके लिए भी मेटाफिजिकल पोएट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आने के चांसेस हैं. आपने कहा मेटाफिजिकल पोएट्री की सर एक वीडियो पहले भी थी जिसमें आपने डिफाइन किया था मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है. आज की क्लास में हम डील करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री. कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बताते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होती है और कैसे डील करते हैं. तो इससे पहले हम आगे बढ़े, हम एक टर्म को जान लेते हैं कि मेटाफिजिकल टर्म है क्या. मेटा एंड फिजिकल. मेटा रेफर्स टू द बियॉन्ड एंड फिजिकल द बाउंड्रीज सच एज द बियॉन्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस, द मेटाफिजिकल. टर्म को क्लियर करने के लिए जानना जरूरी है कि ये कॉन्ट्रिब्यूट किसके लिए. Those who are highly intellectual people definitely, and those who have no idea that they are a part of metaphysical poetry. मैं उन सब पोएट की बात कर रहा हूं जो मेटाफिजिकल पोएट्री में आते हैं और जिनको आइडिया नहीं था कि वो एक सम ऑफ एक ग्रुपिंग में आ रहे हैं जिसको बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री. आफ्टर लॉन्ग टाइम यहाँ पे सैमुअल जॉनसन ने ये पूरी तरह एनालाइज किया कि ये सारे पोएट तो एक ही व्यू में, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही वैल्यूज को लेकर लिखते हैं. तो उसने एक टर्म दी मेटाफिजिकल पोएट्री जो 17th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड पोएट्स के नाम से दी गई, जो हमें समझना जरूरी है. वो इसको लीड करते हैं जॉन डॉन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर. सो हमें इसको यहां से क्लियर करना और कॉन्सेप्ट को समझना है. Let's start the class without wasting much time. The first thing, the term was coined by the poet and critic Samuel Johnson. अगर सैमुअल जॉनसन की बात करते हैं तो we need to know the trinity of Johnson, the action time, action place, action movement, and frankly says those who are doing English honors, masters or preparing for NET JRF, they need to know that trinity of action. And come up to the basic, who describe a loose group of English critics. So why he used the word the loose group of? Because they don't have any thoughts or they are being revealing freely whatever they want to, जो चाहते वो सोच के लिख देते थे. Then come to the next one. It deals with a question that can't be explained by science. Sir, there is no connectivity. See, there is no connectivity. कोई भी आदमी साइंस से कनेक्ट करके इसको थीम वाइज अगर आप बोलो कनेक्ट करके किसी से रिलेशनशिप क्रिएट करके एक्सप्लेन नहीं कर सकता. Here are the features, the most important part of metaphysical poetry. There are many different videos, those have been available on YouTube regarding the metaphysical poetry, but nobody will tell you the basic characteristics. तो इन कैरेक्टर्स को प्लीज याद रखें क्योंकि यही कैरेक्टर्स आप पेपर में लिख के आएंगे. एंड व्हेन इट्स अ 20 मार्क क्वेश्चन मेटाफिजिकल पोएट्री, यू विल गोइंग टू डिस्क्राइब अ लॉट अबाउट दिस. मेरी इस क्लास में सिर्फ आपको ब्रीफ दिया गया. हाँ, सारी डिटेल आपको नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. जिनके पास नोट्स हैं उस नोट्स को इजीली देखते हैं. दोज हु डोंट हैव द नोट्स कैन गेट द नोट्स इजीली. मेरा नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में. एंड रिमेंबर द नोट्स आर फ्री, यू हैव टू पे फॉर नोट्स सो दैट यू कैन एक्सेस टू ऑल दिस. Now come to the basic. The first, the themes. Metaphysical poetry में themes क्या होती हैं? Spiritual themes होती हैं. यहाँ पे union souls को highlight किया था. Love, exactly, love is a part of this. The spiritual, it focuses on love as a union of soul. The love as a union of soul, it refers. Love क्या है? Union soul को define करता है. ये main theme है हर metaphysical poetry की. And then come up to the next part, the literary devices. What are literary devices? कौन सा literary devices यूज किए गए? The metaphor, the most important, figure of speech, pun. Again, this is the most important figure of speech or the poetry device that really without this any poetry cannot be explained in a perfect manner. Then the paradoxes with the two contrary terms. Two contrary terms come together, known as the paradoxes. And the meter to create drama and tension. तो सर हमने कहा metaphor, pun, paradoxes and meter, these all are being used in metaphysical poetry to create drama and tensions. Come up to the next phase, poets. So these all are the highly intellectual people. Those are really studied from Oxford or Cambridge University, the two big name universities. They all come from these universities, all the metaphysical poets. And then come up to the next one, unclarity.
there's a great need to understand, there's a need to concentrate to clear the basic message that was being given in these poetry. It needs concentration and full attention to getting to the roots of these matter. तो अगर आपको समझना है तो एक बहुत बड़ी कॉन्सेंट्रेशन पूरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको चाहिए कि आप समझ पाए. एक्सक्यूज मी. And then come up to the next phase. Unclarity, it needs concentration and full attention to getting to the roots of the matter. Come up to the next phase. That is short points. Metaphysical poetry are always the short points. हाँ, brief और concise होती है, जो सारी चीज को थोड़े से थोड़े पार्ट में बताने की कोशिश करती है और आपको डिफाइन करती है हर चीज को बहुत इजीली. Come up to the next phase. Saying in poetry. So what is saying in poetry? Poetry में क्या मैसेज कन्वे किया जाता है? It's a vast collection of the maxim and saying. So maxims and saying, what is maxims and sayings? जहाँ पे बड़ी सारी चीजें छोटे से वर्ड में बोल जाती है. There are lots of things that we mention in a small phase of time. And then we are having John Donne is a pioneer in this regard. Yeah, he is the one who is the most dominant figure in metaphysical poetry. Come up to the next phase, the metaphysical conceit. What metaphysical conceit? क्या होता है? The comparison of two dissimilar things. So जब दो चीजें दोनों ही बिल्कुल dissimilar है, उन दोनों को compare किया है, which may have little in common. That's true. When they are both are really very dissimilar to each other, so they're going to have least common in between them. Come up to the next one. Originality. They are definitely original. They come from no man land. जहाँ पे कोई दूसरा वहां सी चीज को नहीं लेके आता, अपनी पोएट्री वहां डिफाइन नहीं करता. So they do have their own existence. वो उसको हाईलाइट करते हैं, उसको बताने की कोशिश की है. And come up to the next one, the wit, expression of one's idea or thought. So it's always a wit that makes you different from others. It's all being the one that will define everything in a different style. So the wit is a major part of the characteristics of metaphysical poetry. And then come up to the last phase, that's platonic love. What does it mean by the platonic love? Here, the spiritual love which is free from elements of physical love. It's not been important that they need to be meet physically. It's a platonic love where the love was being in the air and you need to feel it. That being defined in metaphysical poetry. Come up to the most dominant poetry of metaphysical poetry. आपने कहा कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए जब हम बात कर रहे हैं मेटाफिजिकल पोएट्री की. और पेपर के एग्जाम सीरियसली पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन कौन सी पोएट्री को लोड करना जरूरी है. There are certain poetries. One or two I must mention, the ecstasy, and to his coy mistress. ये कुछ पोएट्रीज हैं जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए. अगर मैं बात करता हूँ तो डोमिनेंट पूरी की पूरी पोएट्रीज में जॉन डॉन है एंड देन वन फ्रॉम द हर्बर्ट. अब आपको इन पोएट्रीज को लोड करना है. इन पोएट्रीज की वीडियोस ऑलरेडी अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, यू कैन एक्सेस दिस वीडियो. ये वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, यू कैन फाइंड आउट इजीली. सारी की सारी वीडियोस. अब शुरू करते हैं द फ्ली से. द फ्ली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्री जिसको कहीं से भी आप अवॉइड नहीं कर सकते. यू कैन नॉट अवॉइड दिस पोएट्री. दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री. सबसे डोमिनेंट पोएट्री है द फ्ली. देन कम अप टू द गुड मोरो. The good moral where the love was being defined by the John Donne in a very soothing manner. Then we come to that not to be proud, one of the favorites. So mine, that not to be proud. This is somehow where he was being challenged the authority of death. That she don't have any authority, she cannot do anything her own. It all been predefined by the God. So that have to follow that. Come up next one, that canonization. What do you mean by canonization? क्या है कैनोनाइजेशन, कैसे डील करते हैं, किन चीजों को बता रहा है कैनोनाइजेशन में. Then we come to the next part, the valediction of forbidding point. This poetry you can found in each and every university who provide the course of masters in English. तो वहां पे आपको ये पोएट्री मिलने वाली है. And then come up to the major part, the sun rising. What is sun rising? How it defines, क्या changes हैं. Sun rising किन किन चीजों बता रही है वो सब यहाँ पे हाईलाइट किया गया है.
Then come to the next part, back of my heart, 3% God. You're going to have a paper, you guys need to work out all these poetry. Next one, go and catch a falling star, one of the best. Go and catch the star. And then there is the last three, and I really don't want you to miss these. To his mistress, going to bed, completely a love poem, a dominant love poem over there. And then the ecstasy, and the last from the Herbert collection, but one of the most favorite metaphysical poetry is to his coy mistress. These are the poetry that you guys need to prepare for metaphysical poetry. हम metaphysical poetry क्या होती है, कहाँ से शुरू हुई, who started this, कौन-कौन से characteristics जो define करते हैं metaphysical poetry को, वो सब यहाँ पे. Guys, what you need to do? First thing, you need to subscribe, share, and like the video if you think it's worth to watch and share. Second thing, you need to do all these. As the exam is really coming very near, you have to make your own notes regarding metaphysical. Till then, keep watching. Catch you very soon with a new video just for you.